once again, good evening to all. सब लोगों को नमस्कार. तो आज का हमारा एक very interesting topic है about global garner का रुपे का prepaid card. It's a very popular आजकल in global garner platform, and it is a very stable also, and it is credible also. RBI approved है. So it is very क्या बोलते हैं, easy to talk to people about this card. And of course, in this session, we will understand what is the real benefit if we use this card. See the one card in the right side, it is my card only. So I am using it very extensively. So very easy also, and there's a lot of benefit is there, which I'm going to cover here. Okay, so ये मेरा ही कार्ड है, and मैं हर दिन यूज कर रहा हूँ अभी. बहुत easy है, and it is convenient also to get cashback. Okay, so now what is this RuPay prepaid card? It is actually a prepaid card, which is a prepayment card that you can load money, a specific amount in advance. उसको पैसा लोड करते अपने कितना चाहो उतना लोड कर सकते हैं उसको. 500 rupees, maybe 1000 rupees, 2000 rupees, 5000 rupees, 10,000, whatever amount you want, you can load into that card. And this card is allows you to make purchases online as well as offline. दोनों जगह में यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी. इवन Amazon, when you're shopping, you can use this card. Flipkart or maybe any online websites, you can use this card. And only thing you have to see is you can use this prepaid card wherever there's a RuPay card symbol. I think around 95 to 99% of the जगह में online offline में अभी RuPay card acceptable है. I carry this card every day with me, and इधर उधर घूमने के टाइम में even hardly I get a shop where they don't accept this. Hardly I get, but it's very famous and it's a useful card. And benefit of using this prepaid card. See why we have to use this kind of prepaid card, because many of us using maybe credit card or maybe some other card, so a lot of drawbacks are there in that. But here, if we use this one, it is easy to get. How to apply, next slide I will tell you. And there is no credit check. कुछ नहीं आपका background, or maybe there's no check for that. No bank account is required for that. It is not linked to the bank account also. Easy to use, which I am going to cover. Budgeting tool, very important. Many a time when we use credit card and other stuffs and all, no, we are keep spending money, but we don't have that. क्या है ना, month end में कितना spend किया बोल के हमको पता नहीं रहता. Then in the next month you need to pay that, no. At that time you really worry होता है हमको, वो इतना पे करना है किधर से बोल के. But here it's a budgeting tool. मतलब क्या है, whatever amount you loaded, that you are spending. It is your money, and you will load whatever you want, and then you will spend accordingly. And there is no debt as credit card की तरह. There's no debt there. Safer, easy to use because RBI approved safer है. No bill वगैरह कुछ नहीं आता है. मंथ एंड में उसको बिल देखना है, कितना पे करना है, क्या ड्यू डेट है, वरी कुछ नहीं है. एंड ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों जगह में यूज कर सकते हैं. बहुत सिंपल एंड आसान तरीके से वी कैन यूज दिस वन. नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर दिस RuPay prepaid card. Quickly I cover this one.
And of course, about how to apply for this prepaid card, there's a separate video I am making, either in the uh, uh, description column of this video. The link will be there. So, or you ask the person who were given this video. And also, of course, I will cover this one. In the Global Garner Universal app, once you open that, there's a prepaid card written there in the middle. You click that, it will open this page. In this one, you scroll down to the bottom. There's a digital as well as physical written. You click physical there and then click apply. Once you click apply, this page will come. In this one, terms and condition and all the uh, features, everything is written there. And scroll down to the bottom, you'll see that small PPI and get card. So in this one, two important things you have to know. One is, once you apply, एक बार अप्लाई करने का टाइम में उसको 499 चार्ज पड़ता है। मतलब है ये लॉजिस्टिक को, ये कार्ड प्रिंट करने के लिए, कोरियर डालने के लिए थोड़ा सा खर्चा लगता है, इसलिए 499 इट्स वन टाइम। ओके, एंड देन एक बार वो अप्लाई किया, बाद में केवाईसी करना है। ऑफ कोर्स, हाउ टू कंप्लीट द केवाईसी प्रॉपरली, there is a separate video is also available. So in the description column of this video will be there, and or whoever is आपको ये बताया ये कार्ड के बारे में, they will supply you the that video कैसे केवाईसी करना है। एक बार वो केवाईसी सक्सेसफुल हुआ तो बाद में कार्ड आपको कोरियर आएगा, नॉर्मली अराउंड 10 to 15 days, of course plus or minus depending upon some exception में थोड़ा सा डिले भी हो जाएगा। बट इफ वी कीप following up with the HO people, you will get it very easily. Of course, we have to wait for 10 to 15 days. So then once the card is there with us, we have to load the money. Of course, how to load money, about that also there's a separate video will be there. Everything will be given here in this video itself, in the description column. Once you load money, important point to note, once you, let's say you are loading money 10,000 rupees, 10,000 load करने का time में there is a convenience charge of 5.99%, let's say 6%, 6% convenience charge it will take. So at that time, example 10,000 when you are loading, 6% convenience charge matlab some amount it will deduct and remaining amount it will be loaded there. Okay, important. So now we are using this card for our regular expenses. For that card usage, 6% deducted. It is like there's a already in Global Garner there's a feature called Petro card. That feature, Petro card का feature क्यों इधर आ गया? Because whatever convenience charge we are paying there, it is converted into Petro point in this Petro card. Once there's a 3 bracket is there, basic, plus and elite. Depending upon your usage, you can opt for any of this one. Depending upon that, you can start utilizing this Petro point in buying a fuel for your vehicle. Ideally speaking क्या है, जो कुछ भी आपने कन्वीनियंस चार्ज पे किया वो भर के पूरा का पूरा अपने पेट्रोल और फ्यूल को यूज होता है. There is no wastage. You are not paying money and it is going waste. It is useful in fuel expenses. It is like कैसे बोलते हैं, whenever there is a, okay, in the coming slide I will tell you what is the benefit of using this card. एक बार वो benefit समझने के बाद आपको पता होता है ये 499 कुछ भी नहीं है, and this convenience charge ये भी कुछ भी नहीं, because once you know the real value of that. मतलब एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको. देख लीजिए, हम शादी करते हैं ना, शादी करने का टाइम में क्या है ना, वी हैव टू पे सम प्राइस फॉर दैट.
And now if your expense is like साल में 5 लाख है, तो शादी होने के बाद क्या है, ऑलमोस्ट डबल होता है, इवन sometimes it is more than that. There's a price for that, no? Why we are getting married? You know that there's a process है life में, and there is a lot of benefit is also there, and बच्चे पैदा होते हैं. Actually speaking क्या है, ऐसा ही खर्चा है उधर, लेकिन there's a process and there's a lot of benefit is also there. Likewise here, RuPay card in GG platform, lot of benefits are there, lot. इसलिए थोड़ा सा प्राइस है 499, so negligible price. And Petro Point anyway it is okay. The reason why they are getting, I mean, globalgarner is collecting convenience charge is because GG is giving 2 to 100% cashback. वो cashback process करने के लिए कंपनी को वो परसेंटेज कमीशन चाहिए. So that is why globalgarner is collecting that convenience charge so that वो cashback दे सके सब लोगों को. So that इधर बेनिफिट क्या है हमको, पेट्रो पॉइंट कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, you will get that back. Even though you are paying convenience charge 6% now, you will get it back. Maybe पेट्रो पॉइंट कितना है आपको, 3600 जमा हो गया तो आपने, you can apply for basic card. Once that card is with you, you can start filling your vehicle. It is already cash हो गया उधर. So likewise, you are not wasting any money anywhere compared to any other life situation you're doing. Like I said, no, maybe you are buying vehicle or maybe you're buying mobile. Anything and everything you spending money and वो खर्चा होता ही रहता है. लेकिन इधर you are spending only 499, but वो convenience charge you will get it back. Okay, so now about this petro card details, everything, there is a separate training in this week in the local languages in different state. Now actually what is the features of this card, क्या क्या इस पे पैरामीटर्स है. इट्स अ रीलोडेबल कार्ड है, पैसा आपके जमा कर सकते हैं कितना चाहो उतना, खाली हो जाएगा तो जमा कर सकते हैं. एंड द मैक्सिमम बैलेंस लिमिट इज 2 लाख है. मतलब एक बार आपने लोड करने का टाइम में 2 लाख मैक्सिमम लोड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. यू कैन नॉट लोड मोर देन दैट. एंड 5 years तक वैलिडिटी है. केवाईसी कंपलसरी रिक्वायर्ड है, वो केवाईसी ठीक तरीके से करना है. एंड 5 लाख 5 लाख का मंथली मैक्सिमम लिमिट है. तो मतलब क्या है, यू कैन लोड मे बी 2 लाख मे बी after that 1 lakh. It's total month में 5 लाख only. That's a limit for this card. And I said this one 499 एक बार चार्ज है and 100% cashback मिलता है दीदी ये कार्ड यूज किया तो. Okay, now how we can use this in our daily expense. देख लीजिए अभी तक so far in every household or maybe in your household also like this खर्चे होते रहते हैं. It is like everywhere expenses are going on. इसको बंद नहीं कर सकते. You will pay and forget. Maybe you will pay through Google Pay or Paytm or debit card or credit card or wherever you pay that and forget. But now with globalgarner RuPay का ये प्रीपेड कार्ड यूज किया तो आपने वही का वही खर्चा, but guaranteed 2 to 100% cashback and reward. इस पे मैं 2 to 100% लिखा है. मतलब मान लीजिए आपका ऐप में आपने ICB रखा है, इंस्टेंट कैशबैक रखा है. You use this card, I mean apply this card and एक बार कार्ड आने के बाद लोड करते हैं ना अपने अमाउंट. Whenever you're loading the money, instant cashback में ट्रांजैक्शन होता है वो. Instant cashback. If you are loading 10,000 rupees,
10,000 का 2% आपका इंस्टेंट कैशबैक मिलता है, आपका वॉलेट आई मीन ऐप में आएगा। एंड ऑल्सो 100% क्यों लिखा है सर मैं, 100% रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है जीजी कॉइन, विच इज ऑल्सो विद इन 2-3 days में आएगा। दैट ऑल्सो यू कैन redeem and get that cash. I'm not saying the other bigger benefit. If we are in the my circle zone, you will get a bigger money also. I am saying only 2 to 100% cashback only. उससे बड़ा I am not covering here. Okay. So whatever household expenses you can use through this prepaid card, and you will get 2 to 100% for everything. Now I'll give you some ideas. In every household, some of the major expenses are happening. उसको if you calculate कैसे ये beneficial है बोलते, मान लीजिए fuel expenses. All household has one or the other vehicle. उसको fuel भरते ही है हमने. Use this card. Most, it is like not most, all of the petrol pumps or maybe the gas stations or whichever pumps you are using, this machine will be there. RuPay card लेते हैं वो लोग. Everywhere I go, I do this one. बहुत आसान है. So it is like uh, example. See, I calculated my own example there. In a month, normally मेरा पेट्रोल का expenses है around 15,000 plus or minus. 15,000, let's say 15,000. 15,000 मंथ में है तो 12 months का कितना हो गया? I have to use this one. And okay, 15,000 into 12, 1,08,000, 80,000. See, this is the fixed expense. You will get, if you keep your cashback in my circle, you'll get 18 rupees. It's like very easy. Anyway, you are spending money, no? Use this RuPay card. And of course, there is in vehicle है तो उसको सर्विस भी देना है. सर्विस के लिए भी उधर वो हर साल रहता ही है. There also you can use this. It's about, I am talking about this vehicle now. Maybe once in a while वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उधर भी यूज कर सकते हैं RuPay कार्ड का. फ्यूल एक्सपेंस इज द बिगेस्ट एक्सपेंस है एक घर में. लाइक हेल्थ इंश्योरेंस के बाद बिगेस्ट एक्सपेंस यही है. काफी लोगों ने व्हीकल को ज्यादा यूज करते हैं. ऑफ कोर्स बिजनेस पीपल दोस हु आर गोइंग द फील्ड टू यूज दिस RuPay कार्ड एक्सटेंसिवली. किधर भी बोलिए मत, कितना हो जाएगा देख लीजिए. नेक्स्ट, और एक जगह है, एवरी हाउस होल्ड हैज वन और द अदर इंश्योरेंस पेमेंट. व्हीकल का इंश्योरेंस भरना ही है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस भी पे करते हैं. Nowadays, all the renewal of the insurance also you can pay through this one. I do that now. I am actually helping getting some more customers also for this one. This is sometimes it's a big amount, no? Insurance, some of them it is like we are paying 1 lakh or maybe 50,000 or maybe 2 lakh premium पे करते रहते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस का, वो maybe टर्म इंश्योरेंस का वगैरह. Use this card. Okay. And the biggest thing is every household has a grocery expenses. One challenge was there in GG platform. Max to max क्या है ना, वो ग्रोसरी वाले ना जीजी में वेंडर नहीं बनते थे.
क्योंकि वो 5% जीजी को कमीशन देना था ना, थोड़ा सा ग्रोसरी वेंडर को मुश्किल था वो। दैट इज वाई मेजोरिटी ऑफ अस वो ग्रोसरी के लिए वेंडर नहीं मिलता था हमको, वो मे बी बिग बिग बास्केट और ऐसा कंपनी को हमने यूज करना पड़ता था। बट नाउ you can go to any vegetable vendor or maybe any grocery dukan or maybe any supermarket. You pay through this RuPay card. You buy grocery in whatever uh, places, pay through this RuPay card. See, these are the four example I showed. Actually, there is some more are there, but four are the dominant. See, these in GG also we have a challenge for the vendors. That is why use this RuPay card and do these expenses, four expenses, so that you will generate lot of cashback. Anyway, all these four expenses are happening in every household. उसको रुकने से escape नहीं कर सकते उसको. You can use this card because that challenge also we can overcome if you use this card. Vendor नहीं है सर बोल के, हाँ. और एक, many of you may be thinking this one. See, always when there is a bigger gain, we have to use our mind and you have to change a little bit. कैसे? मान लीजिए आपका वेजिटेबल दुकान, और मे बी आपका ग्रोसरी दुकान, और मे बी आपका कार सर्विस सेंटर. What I will do, see, if I sit, I'm an engineer actually. If I sit in my house, engineer cannot make money. Of course, some of the engineer category now house work from home में होता है. बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलेगा तो वो इन्फोसिस में काम करना है और मे भी कंपनी में जाके काम करना है ऑफिस में, वो पैसा मिलेगा. Likewise, here also, in order to make money using our own expenses, so far we are not, so far जीरो होता था. अभी 100% वो कैशबैक मतलब वो खर्चा वापस मिलता है. ऐसा कुछ बेनिफिट होना है तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना. जॉब चाहिए तो घर से निकाल के वो कंपनी को जाना पड़ता है, सैलरी मिलता है. थोड़ा सा चेंज हो गया ना, घर से बैठने से उधर जाने का. ऐसा ही इधर हमारा खर्चा और लाखों में है हर साल. वो लाखों खर्चों को हमने कैशबैक वापस हमने ले सकते हैं. वो वो लेने के लिए इतना बेनिफिट पाने के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना. क्या है वो चेंज? मैं मेरा वेजिटेबल का दुकान में देखूंगा, उधर वो रुपे कार्ड को एक्सेप्ट करने का उसको मशीन नहीं है, तो मैं फाइंड आउट करूंगा क्या एक अच्छा दुकान है मेरा स्टैंडर्ड में, वो रुपे कार्ड एक्सेप्ट करने वाला दुकान है. क्योंकि मुझे इधर एक फैसिलिटी है, रुपे कार्ड में मुझे कैशबैक मिलता है. जो कुछ भी मैं खर्चा कर रहा हूँ वो वापस मिलेगा बोल के इधर है. मेरा इंजीनियरिंग डिग्री है, मुझे अभी पैसा चाहिए, 1 लाख सैलरी चाहिए, मैं ढूंढूंगा बैंगलोर जाके. मुझे जॉब मिलेगा और मे बी पुणे जाना है, किधर जाना है मैं जाऊंगा उधर. चेंजेस के लिए मैं रेडी. ऐसा ही एक कार्ड में कैशबैक अर्न करने के लिए मैं ढूंढूंगा क्या वेजिटेबल दुकान में ये कार्ड एक्सेप्ट हो रहा है, क्या ग्रोसरी दुकान में ये कार्ड एक्सेप्ट हो रहा है. मेरा रेगुलर का दुकान में नहीं है तो मैं ढूंढूंगा मेरा स्टैंडर्ड का कुछ अच्छा दुकान क्या है बोल के. That is a slight changes. Otherwise, I think I have not changed anyone because so far whichever dukan I was visiting, they were accepting this. Just I gave you one objection handling question. Many of you may be thinking that सर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, आपने बोल रहे हैं यूज करने का. चेंज करिए ना, क्योंकि हमको ज्यादा फायदा चाहिए और जीरो चाहिए, है ना. ये है. So now I am
गिविंग यू सम आइडिया पोटेंशियल कितना है ये कार्ड यूज करके आपने उपयोग ले सकते हैं। एग्जाम्पल, एक कैलकुलेशन है, ये सिंपल है। मान लीजिए आपका घर में, एग्जाम्पल इन योर हाउस, लेट्स से योर ईयरली एक्सपेंस इज 2 lakh। डोंट फील बैड, आई एम नॉट मेकिंग यू पुअर एक्चुअली। 2 lakh in your house, I think some of your house maybe monthly expense है, maybe 2 lakh। मैं पकड़ रहा हूँ साल का, very less only I'm getting taking, it will be 5 lakh 10 lakh some of your houses। let's say छोटा एग्जांपल पकड़ता हूँ, 2 लाख ही है आपका साल का एक्सपेंस। I think I took actually around 20 years you are spending that money। मान लीजिए मेरा अभी 47 है एज, 20 ईयर तक मैं रहूंगा ना, 67 आराम से। आजकल का दिन 100 ईयर तक रहने का हमारा प्लान है। तो मान लीजिए 20 ईयर्स तक आपने 2 लाख का एक्सपेंस किया, तो कितना एक्सपेंस एक्सपेंस हो गया? टोटल है 40 लाख आपने एक्सपेंस किया, वेदर यू हैव दैट मनी और नॉट, वेदर लोन में होगा कुछ भी होगा, 40 लाख तो खर्चा तो किया आपने। वापिस मिलेगा वो? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब, है ना? इट विल नॉट। बट आज से एक चॉइस है आप लोगों को। क्या है? एवरी ईयर वो 2 लाख का एक्सपेंसेस है, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 2 लाख, यू विल गेट इट बैक 2% से 100% तक इन फ्यू ईयर। सी, 2% तुरंत मिलेगा। आप खर्चा कर रहे हैं दिस मंथ, इफ यू आर स्पेंडिंग लेट्स से 15,000, तुरंत आपको 2% मिलेगा पैसा, जी जी मनी। एंड 100% में क्यों लिखा उधर फ्यू ईयर्स में? वो जो जो कुछ भी जीजी कॉइन आता है उधर, वो slowly you are redeeming that, and there is a process of conversion into gg money also in the cashbacks, in different cashback, so that मान लीजिए in let's say around next 5 years में you are getting that 2 lakh into gg money, or maybe you 2 lakh you are redeeming in some gg coin redemption shops। it's easily possible। see, there's a choice is with us। ये कार्ड यूज करके आपने ये 2 लाख एक्सपेंस किया, तो आपका घर का ग्रीन में लिखा है, दैट लाइन इज, इट्स विद यू नाउ। 2% पैसा मिलता है तुरंत एसीबी में, 100% जीजी कॉइन आपको कन्वर्शन होता है, रिडीम होता है, पैसा भी बनता है। आई एम ओके, अंडरलाइन, जीजी जीजी का कुछ कैशबैक को यूज किया तो हमने 100% कैशबैक भी नहीं, उससे ज्यादा भी मिलता है। आई एम नॉट काउंटिंग हियर दैट, आई एम काउंटिंग अ बेसिक 100% figure only to calculate that। see, 20 years का आपका 40 लाख का एक्सपेंस आपको, let's say 25th ईयर और मे बी 30 years का एंड में आपको पूरा का पूरा 40 लाख का वो कैशबैक मिला, तो कैसा होगा? कैन यू जस्ट इमेजिन दिस वन? anyway you are spending that 40 lakh in 20 years में, so example only, I think in your house it is more than that। हाउ अबाउट आपने ये सब 40 लाख को अपना, आपका अकाउंट को आ गया वो, लेट्स से इन वर्स्ट केस 30 years में, आई एम सेइंग नॉट ईयर, फ्यू ईयर्स बोल के लिखता है ना, टू एवरी ईयर्स का 2 लाख का एक्सपेंसेस यू गेटिंग इट बैक इन नेक्स्ट 10 years बोल के पकड़ रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 20 years का एक्सपेंसेस इन 30 years के एंड में आपको 40 लाख रिकवर हो गया बोल। होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू। इट इज लाइक every year ka expenses, use this card and do, in coming years you will get that cashback pura।
See, these are the some of the brands where whatever that 2 lakh you're spending, GG coin आ गया ना आपका, वो GG coin को redeem करने के लिए these are the places. Some of the houses they are regularly using some of this brand. Maybe let's say Apollo, maybe Jockey, or maybe uh, and brand, Cookie Man. So many Cosmopolitan, Crossword, Lotto, Archis. These are the brands regular expense करने का कुछ brands है आप लोगों का. आप इधर जाके शॉपिंग करने का टाइम में दैट जीजी कॉइन 5% उधर खाली होता रहता. Let's say when you are spending your household expenses in this brand, let's say in next 5 years में वो खाली हो गया तो भी it is worth, or else it is waste है ना. वो 2 लाख और नहीं तो जीजी प्लेटफॉर्म नहीं है तो 2 लाख जीरो का इक्वलेंट था वो. 2 लाख खर्चा हो गया उतना ही. बट इफ वी यूज दिस प्लेटफॉर्म इन एनी ऑफ दिस ब्रांड खाली होता रहता हो. See some more. You identify which are the brands you are using. Okay. और नहीं तो I was giving some idea. इंजीनियर है, घर पे बैठ के पैसा नहीं बनता है. बैंगलोर जाना है, दिल्ली जाना है, और मे बी मेट्रो जाना है. लाइकवाइज आपके पास वो 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स है, उसको काली करने से पैसा बनता है ना. काली करने के लिए ढूंढिए क्या क्या ब्रांड है बोल के. इट्स ऑल बोलने का जरूरत नहीं सर. मैं एक्चुअली एडिडास को यूज नहीं करता हूँ सर. मैं घर से बाहर नहीं जाता हूँ सर. पैसा नहीं बनता. इंजीनियर है तो इन्फोसिस जाने से ऐसा बड़ा बड़ा कंपनी को पैसा चाहिए तो उधर जाना है. लाइकवाइज इफ यू वांटेड टू मेक a difference in your house, you have to do certain changes. ढूंढिए किधर किधर जगह में ये यूज कर सकते हैं. सी पैंटालून है, ट्रेंड्स फुटवेयर है, क्या क्या ब्रांड है ढूंढिए. वेरेवर यू वांटेड टू खर्चा करना है घर का, ढूंढिए ये क्या क्या ब्रांड में अपने खर्चा कर सकते हैं. ओके. इफ नॉट, what I did is I use some of this brand and I select some of the products in GG Mall. In GG ऐप में, यूनिवर्सल ऐप में GG मॉल है, उस पे कुछ प्रोडक्ट पे है, उसको भी more than 5% redemption भी होता है GG कॉइन का. I use some of them. Select, choose some of the products from there. And there is GG local vendors है, काफी GG local vendors हैं, they are accepting GG coins. Search for those, और नहीं तो make some GG local vendors. I restarted now. Already I was doing that and I did that and now I am doing that again. So GG local vendor. In fact, in places where I visit, I tell them that see local vendors मेरा है मास्टरमाइंड एंटरप्राइज बोल के, मेरा इधर है ये वाला. It is accepting GG coin. I'm telling that जो कुछ भी प्रोडक्ट्स आपको ये चाहिए मेरा वो कैटलॉग है, I will send you that. If you want, I will accept GG coin. See there is a way to convert this reward points into money. There is a way a software engineer can make money by going to city, not village में बैठ के पैसा. एक्सेप्शन है, बोलिए मत. वो वर्क फ्रॉम होम है, कंपनी को ज्वाइन किया उधर जाके आके इधर बैठा, दैट इज एक्सेप्शन. और नहीं तो वी हैव टू चेंज, वी हैव टू मूव आउट फ्रॉम हाउस. लाइकवाइज हियर आल्सो वी कैन make use of this card very effectively so that all our household expenses you can convert into cashback and you can get 100% back. Only thing is that you have to see the possibility. किधर किधर मैं स्पेंड करूँ, किधर किधर क्या ब्रांड यूज करूँ, क्या दुकान यूज करूँ, किधर. You have to. Okay. See,
who are all using this one now. I gave you some simple ideas. आप यूज करिए आपका इमेजिनेशन को. कल में ऑर्डर करना एक पहला स्टेप है इमेजिनेशन में. लेट मी ऑर्डर में मेरा अभी घर का 5 लाख खर्चा होता है हर साल. मैं खर्चा करता हूँ लेट से 20-30 ईयर्स. 5 लाख, 5 लाख इंटू सो मच. इतना लाखों खर्चे को मैं कैशबैक अर्न करूंगा. कैन यू इमेजिन दैट? इमेजिन किया तो हो सकता है. रियल मैजिक वही है. इफ यू इमेजिन दैट इन योर फैमिली में वो हो जाएगा. बट इफ यू इमेजिन द अदरवाइज वो मिलेगा. ऑलवेज ये प्लेटफॉर्म में काफी है हमको पोटेंशियल है. इमेजिन दैट गुड थिंग्स, नॉट द इमेजिनेशन को और बैड थिंग को यूज मत करिए. इफ यू डोंट नो सर्टेन क्या है इस पे सीखिए. देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग ideas are there. Okay, so that's all for today. Just as a consumer ये प्रीपेड कार्ड को यूज किया तो क्या बेनिफिट है बोल के इन नटशेल थोड़ा सा बताया. इन डिटेल आपको क्या है रिसर्च किया तो काफी चीजें हैं इसको यूज करके आपने कमा सकते हैं. काफी चीजें. I'm not going in deep in any of the topics. Okay, so thank you very much, and let us all use this RuPay card of GG platform, and more shopping कर सकते हैं, and we can enjoy more and more cashback and earn that expenses back. Okay, so have a happy holidays. Thank you. Bye bye.